Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the my third lecture during the course on innovation and entrepreneurship, and this is overall the fourth lecture that is being delivered on the topic of top 10 innovative countries in the world. The purpose of this lecture is to give you an overview that how these countries are the leading countries in the world, how they are the most innovative one, and what we can learn being Pakistani and being a Pakistani national, that how we can improve innovation in our country, what parameters that we should study, what parameters that we should improve in Pakistan. So I'm going to give an overview. Uh, this will be a very generalized lecture in which I will cover mainly the overview of these countries. Otherwise, like if we talk in detail, then we can talk for hours for each country, and that's why I'll give a brief overview of these countries and what experience I could gain in these countries. Luckily, I'm one of the person who been to all these countries, so I have a very good idea of these countries, and I had a very good discussion with the academic institutes, leaders of these countries, with the universities head, and also with the research institutes and their industry. So that's why I will share some of my own perception about these countries and the knowledge later on I got from these countries. So I will share those details as well. So these are the top 10 countries. So how the innovation is being actually measured. So this is also very important because according to Global Innovation Index report of that is recently published in 2019, they have different parameters that they have to. So here is a list of the parameter on the very right side. This is for the Pakistan. Pakistan is at 105 position among 129 countries, and these are the parameters that they have to like investigate for each country in order to give the ranking. And on this basis, like there are around 80 different parameters that they have to investigate for each country to give the ranking to those countries, and those countries who are leading in these parameters and the score they got, they are the one who are at the top position. So I'll give the overview of these parameters as well. So this is actually based on number one thing is the institutions, what is the environment in these institutions, the regulatory environment in those countries, the business environment in those institutions. And then very important parameter is human capital and research, like what is the education in those countries, what is the secondary and tertiary education, for example, in those countries, and what is the percentage of research and development in these countries. So this is also very important. And then comes the infrastructure. Infrastructure actually mainly based on ICT, the information and communication technologies, and many other like the sustainabilities in these infrastructure. So they are the parameter that's being studied. Then there is the market sophistication. How sophisticated is the market? How much is the involvement of ICT in these market? What are the credits and debts and so on? And then business sophistication. How sophisticated is the building? How innovative is the business in those countries? And then what is the creative output? This is very important parameter, that how creative are those countries in their high tech, in their products that they manufacture. So creative knowledge and so on. And then there is a knowledge and technology output from those countries. And Pakistan is really good. Pakistan is at 70th position in knowledge and technology output. That is the knowledge creation and knowledge impact in those countries, and so on. So this is very important. So these are the major parameters. Once again, institution, human capital and research, infrastructure, market sophistication, business sophistication, creative output, and knowledge and technology. So these are the parameters that are studied, and there are subcategories of each parameter. So overall, there are around 80 different parameters that are being studied for each country in order to give the ranking. And Pakistan is after 100 countries, so we are at 105 position now in the ranking. So I am going to give the list of each country at the top 10 positions. And then, so this position is actually interchangeable. So almost these are the countries who are among the top 10 or 15 countries. Sometimes they go a little back, like Finland could be like in the top 10 countries sometimes, and South Korea is out.
and sometime Israel is there, and some country may be missing in that. So, but overall, these are the countries which, if we study for the last like 5 years, more than 5 years, so these are the countries which are the leading country in terms of innovation. And at most of the time, it's the Switzerland which is at the top position. And why is the at the top position? It's mainly through the knowledge-based economy. So they are actually अब जो बात की जाती है पूरी दुनिया में कि अब दुनिया जो है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के बारे में सोच रही है, so this is the country which mainly focuses on the knowledge based economy. So their economy is mainly based on the knowledge they create. And in addition, they have value-added manufacturing. For example, the tech giants. I have given an example. Novartis is a big pharmaceutical company all over the world. Roche is a big company. So these are actually from the Switzerland, and they have like very good involvement in the business. So if we talk about the world leading banks, they are from the Switzerland. So Switzerland is the country which is actually based on the knowledge. It's a beautiful country. On the other side, so they have like lot of attraction for the tourists, but on the other side they have the knowledge based economy. Going to give you one of example of one of my colleague. He was a BS student. His name is Mr. Norez. He's going to be doctor very soon. So Mr. Norez is a student from Punjab University. He did his graduation from department Institute of Biochemistry and Biotechnology, and unfortunately he couldn't get the research in the department. Later on, he was interested to get a higher education from the developed countries. So he went to Germany for his master's, and he could done very good, although he couldn't get the research during his PS program, but in his MS research, he could done very good job in his research, and on the basis of that research, he got a scholarship from Switzerland. So he is in Basel, Switzerland nowadays, and he's doing the work in area of stem cell biology. He's a very good colleague of mine, so I thought I should give the example of him. He could deliver lectures in different universities of Pakistan whenever he visits. So we arrange his lectures in different universities. So he's a student. Like in Pakistan, this is the difference. यही मैं बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान में इसको रिसर्च नहीं मिली, लेकिन जैसे ही इसे अपॉर्चुनिटी मिली और अच्छा इन्वायरमेंट मिला, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. उसने माइक्रोफ्लूइडिक्स में जो है इनका जो काम है, द यूनिकनेस ऑफ हिज वर्क इज एक्चुअली द सिंगल सेल टेक्नोलॉजी. ये दुनिया में इनका लीडिंग वर्क था कि आप किस तरह से स्टेम सेल को सिंगल सेल लेवल तक आप आइसोलेट करके उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. जीन एक्सप्रेशन का दे कुड चैलेंज मैनी स्टडीज, इससे पहले जो हुई कि ये जीन पहले एक्सप्रेस होता है, ये जीन बाद में एक्सप्रेस होता है. So what they could do, they could in real time investigate whenever there is a differentiation process. So in this differentiation process, this gene actually expressed first and this gene expressed later on. So this is the work they have done. He could publish in Nature. So he's one of the Nature, is one of the very prestigious journal in the world. So if somebody publishes from Pakistan, उसकी Nature में publication हुई है, वो 10 साल के लिए उसके काफी होता है कि मैंने नेचर में पब्लिश किया. सो ही इज द पर्सन हु इनकी नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हैं इन नेचर. सो दैट्स रियली ग्रेट. ड्यूरिंग हिज पीएचडी ही कुड पब्लिश इन नेचर, और अभी अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और बहुत सारे और कंट्री से इसे पोस्ट डॉक के ऑफर हैं कि हमारी आप यूनिवर्सिटी में अगर काम करें. सो दिस इज हाउ actually this is the difference in the environment. क्या आप ऐसे environment में जाते हैं जो कि value addition करते हैं, जो innovation करते हैं, जो innovative thinking को promote करते हैं, जो infrastructure provide करते हैं कि आप innovative work करते हैं. So this is how actually these are the things that makes the difference. So इसी तरह से हम पाकिस्तान में भी अगर इसी तरह से, और भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, अगर हम इस तरह के काम करें तो हम बहुत बेहतर जो है वो कर सकते हैं. So this was the Switzerland, and number 2 is the Sweden. So Sweden is also very famous country. अभी जो है, they have very good institutes, the universities. So number one thing that make the unique about the Sweden is they are well-designed universities and the manufacturing sector. That's really good. I've been to Sweden. I've been to their different institute, and I have seen that they are making the difference. उनके जो approach है research के हवाले से, that's really unique.
और इनकी जो you have the very good knowledge about Sweden that the level of work they are doing and especially the work on the sustainability जो है ये बहुत अच्छा है लाइक अभी हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें सो दे हैव अ लॉट ऑफ फोकस ऑन रीन्यूएबल एनर्जी और उसकी यूटिलाइजेशन के हवाले से और उसमें किस तरह से एडवांसमेंट्स हो रही हैं सो दे आर doing quite a very good work in that area. If we talk about UK, so their ranking, their main pillar for their good ranking is their education and productivity. You know, they have the leading university like University of Cambridge is there, Oxford University is there. अगर हम कैम्ब्रिज की बात करें तो आपको पता है इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड में जितने नोबल लॉरियर्स अब तक हैं साइंस में जो है हम दो लोग ऐसे हैं जो कि नोबेल लॉरियर्स हैं एंड दे आर आल्सो द वन हु हैज वर्कड अब्रॉड उन्होंने अपने नेटिव कंट्री में जैसे डॉक्टर अब्दुल सलाम थे या मिस्र से थे डॉक्टर साहब they have the one who has worked not their parent country उन्होंने पाकिस्तान में या मिस्र में काम नहीं किया they worked abroad और इसीलिए उसकी वजह से दे और इस अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की बात करें सो दिस इज द यूनिवर्सिटी दैट हैज प्रोड्यूस्ड ओवर 100 नोबेल लॉरियट्स सो अगर ओवरऑल बात करें तो 10% दुनिया में जो नोबेल लॉरियट्स हैं दे आर फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दिस इज द डिफरेंस द यूनिवर्सिटीज आर मेकिंग और इसी तरह से दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ नॉलेज इनोवेशन की अगर बात करें जो मुख्तलिफ हवालों से जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें सो दे आर कमिंग फ्रॉम द लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड और यूके की यूनिवर्सिटीज जो हैं देयर वन ऑफ द इंडस्ट्रीज देयर एजुकेशन इंडस्ट्री क्योंकि उनकी पूरी दुनिया से दे अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स एंड दे हैव लॉट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑल अराउंड द यूके और दिस इज द रीजन कि ये जो है वन ऑफ द इनोवेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड है मैं जो है मेरी मुलाकात हुई प्रोफेसर टीम हंट के साथ ही इज वन ऑफ द नोबेल लॉरिएट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और उससे मैंने पूछा कि जी आपकी यूनिवर्सिटीज में ऐसा क्या है कि आपकी यूनिवर्सिटीज जो हैं दे आर द मोस्ट इनोवेटिव दिस इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन आई आस्क्ड हिम एंड आई हैड अ वेरी गुड डिस्कशन विद हिम अब भी मेरी उनसे जो है वो डिस्कशन होती रहती है सो the thing is he mentioned that जो कि हमारा एक डिफरेंस है बाकी कंट्रीज की निस्बत दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम जो है लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करते हैं हम मॉडिफिकेशन करते रहते हैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है वो डेवलप करते हैं और दिस इज व्हाट आई हैव सीन मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं यूएस में गया था फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर माय पीएचडी रिसर्च I was working one of the life science institute in California and at that time हमारा जो लाइफ साइंस का इंस्टीट्यूट था उसकी जितनी भी लेबोरेटरीज थी सबसे जो बड़ी लेबोरेटरी थी वो इनकी इंजीनियरिंग की लेबोरेटरी थी दैट वाज अ ह्यूज बिलीव मी दैट वाज अ ह्यूज लेबोरेटरी इन द होल इंस्टीट्यूट और उसमें what they used to do they have very good engineers और जो भी उनको इक्विपमेंट में मॉडिफिकेशन चाहिए होती थी वो वहाँ पे मॉडिफिकेशन करते थे और फॉर एग्जांपल उन्होंने लेमिनर फ्लो हुड के अंदर माइक्रोस्कोप एडजस्ट करनी है माइक्रोस्कोप में मॉडिफिकेशन करनी है कैमरा इंस्टॉल करना था या जो भी उन्होंने उसके पैरामीटर स्टडी करने थे सो दे यूज्ड टू गो टू इंजीनियरिंग लैब और उनसे मॉडिफिकेशन शुरू करवा लेते सो इंफ्रास्ट्रक्चर दे वर्क ऑन द लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसी से अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें दे हैव वर्कड ऑन सिंगल सेल टेक्नोलॉजी सो हैव दे बिल्ट ए सिस्टम कि वो माइक्रोफ्लूइडिक का तो सिंगल सेल को आइसोलेट कर सकें उसे देख सकें फिर उसका एनालिसिस कर सकें और वो दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे थे Then the other thing that he mentioned, that this is very important, is the freedom of work. हमारे यहाँ this is one of the things that we lack in Pakistan कि हमारे यहाँ उस तरह से freedom बहुत सारे ऐसे students हैं they have brilliant ideas they can work on those ideas उसमें उनका passion होता है dedication होती है बहुत सारी motivation होती है they work to do they want to work in that area लेकिन हमारे यहाँ उस तरह से freedom of work नहीं है so this is the thing that we have to establish in Pakistan कि हम अपनी universities में freedom of work दें जो आपके पास ideas हैं उसको transfer that's why we have started this innovation lab through research and innovation club कि हम इसमें यूनिवर्सिटीज में इनोवेशन लैब बनाना चाह रहे हैं जिसमें हमने काम शुरू किया हुआ है ताकि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नॉवल आइडियाज हैं वी गिव देम फ्रीडम टू वर्क वो अपने आइडियाज पे काम कर सके एंड द अदर थिंग ही हैज मेंशन इज द स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वो कहते हैं कि जो भी हम काम करते हैं उसको
उस पर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, हम ये नहीं होता कि हम कोई भी एक चीज़ ऐसी नई डिस्कवर करें और जंप लगाना शुरू कर देंगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह से नहीं है। हम जो भी काम करते हैं उसको हर पैरामीटर से, फॉर एग्जांपल अगर जीन एक्सप्रेशन के ही अगर हम बात करें, आप में से मोस्टली जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बायोलॉजिकल साइंसेज से हैं, तो अगर हम देखें कि कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, अगर इसी की बात करें तो उसमें वो कहते हैं जी हम उसे चेक करते हैं, उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, उसको चेक, उसके आरएनए लेवल पे हम चेक कर सकते हैं, उसको हम प्रोटीन लेवल पे चेक कर सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि माइक्रो आरएनए कौन से उसके जीन के साथ बाइंड है। सो दिस इज द थिंग दैट वी कैन चेक एट डिफरेंट लेवल। चेक भी डिफरेंट हवालों से हो सकता है। हम आरएनए को जो है वो ब्लॉटिंग के जरिए चेक कर सकते हैं, हम उसे रियल टाइम पीसीआर से चेक कर सकते हैं, प्रोटीन के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। तो वो कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसको, उसके जितने पैरामीटर्स होते हैं वो हम स्टडी करते हैं, उसको हर हवाले से देखते हैं, देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। एंड दिस इज द डिफरेंस दैट वी हैव इन आवर यूनिवर्सिटीज के हम एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड पहले बनाते हैं, देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो दिस इज थिंग दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज के हमने यही चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करनी है कि हम हमारा एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप. So this is the example of United Kingdom, and at the fourth position is USA. USA क्यों innovative country है? They have global facing markets. इनकी बड़ी बड़ी markets हैं. आप अगर बहुत बड़े giants की बात करें, Microsoft is there in United States. अगर हम Apple की बात करें, that's a huge company in the United States. So these are the leading countries. Or the difference from the US and other countries is there lot of focus on innovation. They really focus on innovation. वो इस तरह से है, they have attracted the talent from across the world. पूरी दुनिया से ये talent को attract करते हैं, जो बहुत अच्छे scientist होते हैं उनको वीज़ा के हवाले से ease देते हैं, उन्हें attract करते हैं मुख्तलिफ हवालों से, so they can come. और US में they have put a lot of money on research and development. That's why they are the leading in actually research and development. तो उसमें they attract the talent. अगर आप top leading इनकी companies देखें तो they have the CEOs. They are not the local one. They are from different countries who have been in US. They work there. They have provided them the environment in which they could flourish. और अब they are the leader in that. अगर हम even बात करें Apple की, तो आपको पता है the CEO Apple is from India. He was originally from India. So this is how they are making the difference. अगर हम पाकिस्तान में भी, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, रिजर्व मनी की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट के पास तकरीबन इस वक्त दो फ्लक्चुएट करता है अराउंड 15 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है रिजर्व मनी होती है. आई वाज चेकिंग द एप्पल के, एप्पल के पास रिजर्व दैट वाज ओवर 400 बिलियन यूएस डॉलर्स. सो यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज दे हैव in general. And the other thing is they have a lot of focus on the partnership of these countries, companies के इन्होंने जैसे सिलिकॉन वैली है, all the tech giants are there, they are collaborating with each other to develop more innovative products and services. So this is how they are making the difference. और universities का environment देखें, believe me, I've been to the United States several times, or I have worked in different universities of United States. What I have observed, the university environment of United States is the leading in the world. Knowledge sharing के seminars चल रहे होते हैं जिसमें top researchers को invite करते हैं, वो अपना आके जो है वो share करते हैं कि किस तरह से they are making the contribution in the field, और नई ideas share करते हैं, नई technologies share करते हैं. So this is the best thing that I have seen in the United States. So their universities are good. They have good research. मैं अभी कल ही example दे रहा था with one of the researchers from Islamic International University that this is the difference in the United States and in Pakistan. When I was for the first time in the United States, so the at that time MPhil level का जो काम होता था वो mostly ये होता था कि हम एक जीन को क्लोन करते थे और उसका एक्सप्रेशन देखते थे कि कितना उसका एक्सप्रेशन हो रहा है. तो it was used to be MPhil work. 6 महीने से 8 महीने उसमें लगते थे वो काम करने के हवाले से. और यूनाइटेड स्टेट्स में जो हमारी लेबोरेटरी थी, we were used to express the gene in yeast system. तो हम yeast में बड़ा तेजी से काम करते थे. Even yeast expression हम जो है 3 से 4 दिन में कर लेते थे. क्लोनिंग से लेके एक्सप्रेशन तक का काम हमारा 3 से 4 दिन का होता है. So this is how they are making the difference. हमारा जितना भी चीजें उसमें चाहिए होती हैं, so they are available. अगर आप सुबह से कोई चीज ऑर्डर करते हैं शाम को आपको मिल जाती है. So this is how they are like they have made the environment very conducive to do the research. तो इस तरह से यूएस इज द लीडिंग. मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी प्रोफेसर जो है रॉब लैंगर की, यू कैन आल्सो स्टडी, ही इज फ्रॉम एमआईटी.
engineering का इनका background है. So this is how the single research is made. I had like discussion with Professor Lanker, और he has over 1400 articles जो कि इन्होंने publish किए हैं. इनके 1300 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं. हमारे यहाँ जो है एक दो पेटेंट हो जाए तो बड़ी बात हो जाती है. तो एंड वो भी पेटेंट ऐसे कि दे आर मेकिंग द डिफरेंस, उनके बड़े वैल्यू है उन पेटेंट्स की. सो ही हैज़ ओवर 1300 पेटेंट्स. ही हैज़ ओवर 300,000 साइटेशंस. हमारी साइटेशन जो हैं वो उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द इनोवेटिव वर्क एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क. सो ही इज द अभी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ही इज द 7th मोस्ट साइटेड पर्सन इन द हिस्ट्री. एंड अमंग अगर लिविंग की बात करें तो ही इज अमंग द 5th मोस्ट साइटेड पर्सन हु इज लिविंग. इसका बजट जो है, एनुअल बजट इसकी लैब का $10 मिलियन से जाता है. वो 1.5 बिलियन रुपीस बनता है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के बजट के ऑलमोस्ट इक्वलेंट होता है. और एज इंडेक्स इस बंदे का 272 है. एज इंडेक्स अगर आप अपने रिसर्चर से पूछेंगे या सुपरवाइजर से पूछेंगे या यूनिवर्सिटी से पूछेंगे, तो दिस इज द एक्चुअली एच इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द वर्क, के जो काम किया है उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा. अगर पाकिस्तान का ओवरऑल एच इंडेक्स देखें तो ये अभी 200 से कम है, और इस एक बंदे का एच इंडेक्स जो है दैट इज 272. सो दिस इज हाउ दे आर मेकिंग द डिफरेंस इन द वर्ल्ड. अगर हम बात करें fifth leading country, that is Finland. Finland is a very small country, लेकिन उनका जो अगर देखे जाए, they are the leader in higher education and even जो इनकी प्राइमरी एजुकेशन है, अगर देखें दुनिया में सबसे अच्छा जो तालीमी निज़ाम है उसकी अगर रैंकिंग की बात करें, पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो इस वक्त 120वें नंबर पे है. लेकिन फिनलैंड इज़ द कंट्री विच इज़ टॉप इन एजुकेशन. तो एजुकेशन इनकी बड़ी अच्छी है. शुरू से ही जो है क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, नॉलेज एडिशन की तरफ जाते हैं, नॉलेज रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करते हैं. हाई टेक की जो है दे आर प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं. रिसर्च जो है, पेटेंट्स जो है, अगर इन सारी चीज़ों की बात करें, सो फिनलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, और इन्होंने जो है काफ़ी दे हैव मेड द डिफरेंस इन द वर्ल्ड. This is the country which is also one of the leading country or innovative country in the world. Singapore, I often give the example of Singapore. Singapore is a very small country. मैंने शायद पहले lectures में भी आपको, I don't know, it was in the first or the second lecture, तो जिसमें मैंने बताया था कि सिंगापुर is a very small country जहाँ पे कोई natural resources नहीं है. उनके पास बहुत छोटा सा मुल्क है. 5.5 इसकी पॉपुलेशन है, और ये इसका रकबा भी जो है आई थिंक 700 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर. सो इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री. एक घंटे में आप एक तरफ से दूसरी तरफ आप इस कंट्री के जा सकते हैं. सो इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री. लेकिन अगर देखें जाए एजुकेशन में तो इनकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं. दे आर द टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड. what is the difference in the Singapore is the political stability. They are working on the sustainable model. मैंने शायद इससे पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी भी होती है. हम चूँकि शहर का विजिट करने गए तो हमने जो है वो बिल्डिंग्स में लेके जाया गया. अब इनकी जो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं दे हैव द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. और पाकिस्तान में अगर हम बात करें इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आजकल जो है जहाँ पे पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है, बोरिंग हो रही है हर जगह पे और पानी निकालने की कोशिश हो रही है. बट व्हाट सिंगापुर हैज़ डन, यहाँ पे देखें इस्लामाबाद में पोरिंग बहुत ज़्यादा होती है, बारिशें होती रहती हैं, लेकिन हमारे पास कोई वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है उस तरह से इंस्टॉल किया. अब सिंगापुर की तकरीबन सभी बिल्डिंग जो नई बनाई जा रही हैं, दे हैव द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. उनका प्रॉपर एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, जिससे जितनी एग्रीकल्चर जो होती है, जितनी प्लांटेशन उनकी है, उसको यूज़ करते हैं. सिंगापुर में आप जो है ड्रायर यूज़ नहीं करते कपड़ों को जो है सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए. पाकिस्तान में इवन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा 50 डिग्री सेल्सियस पे भी हम जो है ड्रायर यूज़ कर रहे होते हैं. सो दिस इज़ हाउ दे आर वर्किंग फॉर द सस्टेनेबिलिटी. और इसी चीज़ों को अडॉप्ट करने की वजह से दे आर द लीडर इन इनोवेशन. एंड इन एडिशन दे हैव वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग. पूरी दुनिया से तेल जो है उनकी रिफाइनरीज में आ रहा है अरब कंट्रीज से. दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट्स, उससे पेट्रोल, उससे ऑयल और दूसरे ऑयल्स और दूसरी चीज़ें बना के वो पूरी दुनिया को सेल कर रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ दे आर द मेकिंग द डिफरेंस. अगर हम इवन बात करें, हम साथ साथ बात करते हुए जाएंगे. And so this is how they are making the difference, and this is the thing that we have learned in Pakistan कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं और किस तरह से हम अपने बिहेवियर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं. साउथ कोरिया is at number 7th in the leading
इनोवेटिव कंट्री, उसमें ये है कि दे हैव हाई टेक प्रोडक्ट्स. इनकी प्रोडक्ट्स अगर देखें, सैमसंग इज ए बिग ब्रांड नाउ इन द वर्ल्ड. जो है अब इन अगर सेल फोन की बात करें, दे आर द लीडिंग ब्रांड इन द वर्ल्ड. दे आर कम्पीटिंग विद एप्पल. अगर हम होंडाई की बात करें, so the car manufacturing they are one of the leaders in the world. LG is a very famous brand electronics की अगर हम बात करें. So this is how they are making the difference. इनकी मैन्युफैक्चरिंग, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया इज लीडिंग. नंबर ऑफ पेटेंट्स दे आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल विद द यूनाइटेड स्टेट्स. अभी मैं एक रीसेंट रिपोर्ट देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि द नंबर ऑफ पेटेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर जितने यूनाइटेड स्टेट्स हो रहे हैं. सो दिस इज हाउ दे आर मेकिंग द डिफरेंस कि नंबर ऑफ पेटेंट. एजुकेशन इज रियली गुड. द यूनिवर्सिटी दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू वर्क ऑन द रिसेंट इश्यूज, रिसेंट चैलेंजेस पूरी दुनिया में हैं. सो दे कैन, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो साउथ कोरिया के पास भी कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बट दे हैव the knowledge resource, the knowledge economy. So that's why they are making a difference in the world. फिर नंबर 8 पे है जी डेनमार्क. डेनमार्क इज आल्सो वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. नंबर ऑफ रिसर्चर्स, दे हैव ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ रिसर्चर्स, दे हैव क्वालिटी एजुकेशन. द यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें, डेनिश यूनिवर्सिटीज, दे आर द लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड. दे हैव वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर सस्टेनेबिलिटी की हम बात करें, सो दे infrastructure is very sustainable. And then they are really good in business sophistication. So they have very good like manufacturing sector, high tech sector, and they are making a difference. So अगर हम बात करें patents की, quality research की, business adaptation की, business के हवाले से, work के हवाले से, so this is how the Denmark is a leading country in the world. I've been to different universities of Denmark, and I have seen this is how they are making the difference in the world. And then we talk about the Netherlands. Netherlands is also a very small country, but they are making the difference on the basis of research work they are doing. I've been to different universities of Netherlands, and this is what I have observed there. And they have very good technology output. Denmark, Netherlands is a very small country, close to Germany and UK. लेकिन इनके एग्रीकल्चर, दे आर वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड इन एग्रीकल्चर. किस तरह से, this is how they have made the difference. And then they have very good high tech manufacturing, and that's making the difference. So this is how Netherlands is one of, and Germany is a very famous country on the basis of patents. आप पूरी दुनिया की अगर रिसर्च लेबोरेटरीज में जाएं तो आप देखेंगे वहाँ पे मेड इन जर्मनी चीज़ें पड़ी हुई कि वो डायग्नोस्टिक के हवाले से हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी में दे आर वन ऑफ द लीडर इन द वर्ल्ड. they are really good in mechanics. Although their universities की अगर बात करें तो they are not in that top ranking as compared to many other countries, but there are some of the areas like medical technology and mechanical engineering, they are really good in that, and this is how they are making the difference. So this is the list of the leading countries. I will not give the details क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वो हो जाएगा. But this is from the Global Innovation Index in 2017. मैंने शुरू में आपको बताया कि कुछ countries जो हैं वो ऊपर नीचे जाते रहते हैं, but these are one of the leading countries. Like Switzerland is at number 1, then Sweden is there, Netherlands, United States of America, United Kingdom, Denmark, Singapore, Finland, Germany, Ireland. So I have covered almost all the countries. Ireland इस list में था, अभी जो recent है उसमें नहीं है, but Ireland is a country. मैं इसकी भी आपको example दे दूँ. They have the innovative architect. Architect is really good, and education is really good in Ireland. So this is how they are one of the leading, one of the most innovative countries. So there are a lot of lessons that we can learn from these countries. And if we talk about the South Asian countries, I will list here the South Asian countries. पाकिस्तान की 2018 में जो रैंकिंग थी वो 109 थी. We were among 109 position among 100 and around 30 countries. Bangladesh is at 116 position. Nepal is 108. Sri Lanka is better than us at 88. Education in Sri Lanka is really, अगर हम वहाँ पर literacy rate देखें, that is 94%. So that's huge as compared to many other countries. India is at 63 position. So India is quite good and doing good in because they on the basis of high tech manufacturing. अगर हम बात करें खुसूसन बायोटेक की और अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सो दे आर वन ऑफ द लीडर्स इन द वर्ल्ड. एंड दुनिया, आप भी मैंने इससे पहले लेक्चर्स में बात की कि वैक्सीन प्रोडक्शन के हवाले से भी अगर बात करें तो वो दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है. जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो बिलियंस ऑफ डोजेस बना सकता है एक साल में.
फिर भारत बायोटेक is leading pharmaceutical industry. So this is how they are making it. Iran is really good in our region. अगर हम बात करें वो 65th position पे है. Turkey is I've been to these countries as well. बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा अगर इनकी मैं डिटेल देना शुरू करूँगा. Turkey is at 50th position and Malaysia is 35. अगर हम 2019 की बात करें तो पाकिस्तान ने कुछ इम्प्रूव किया. We are now at 105th position among 129 countries. बांग्लादेश उसी नंबर पे है. नेपाल जो है दैट इज आल्सो वेरी सेम एट 108 था 2018 में. 2019 में 109 पे है. श्रीलंका इज आल्सो द सेम, बट इंडिया ने काफी इम्प्रूव किया. वंस अगेन अगर देखें इंडिया की रैंकिंग 2018 में 63 थी, वो अब 52 पे आ गई है. सो दे आर डूइंग गुड. अगर मैंने अभी एक वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने लिस्ट किया था टॉप 100 rising institutes in the world, तो उसमें 2 इंस्टीट्यूट जो थे वो इंडिया के थे. So they are making the difference in that. They are putting a lot of money on education. That's why. And so we also have to learn. So we have to pour more money in education. जो कि अभी बजट कर्ज लग रहे हैं और मजीद शायद कर्ज लगेंगे after corona. But this is the area that we have to work. और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है एजुकेशन में, जो 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है उससे 10 रुपए आपकी यकीनी आउटपुट होती है. सो दिस इज व्हाट वी हैव थॉट, और दिस इज व्हाट वी हैव टू अश्योर टू आवर पॉलिसी मेकर्स दैट वी हैव टू इन्वेस्ट मोर ऑन एजुकेशन. ईरान जो है दैट इज आल्सो इम्प्रूव्ड इन 2019. इनकी जिस तरह से हमारी 4 रैंकिंग बेहतर हुई है, ईरान की भी 65 से 61 हो गई है. टर्की आल्सो इम्प्रूव्ड एंड मलेशिया is at 35th position. So Malaysia is also very good. I've been to Malaysia and I have seen their universities. University of Putra, Malaysia is a very good university. और उनका जो टेमी इंडस्ट्री लिंकेजेस का है very strong program. कभी अगर हम बाद में बात करेंगे डिटेल में कि how Malaysia is doing. So I will tell in detail कि किस तरह से Malaysia is making the difference in the world. So this is the ranking of the South Asian countries. And these are the top 10 skills. I will just name these skills. कभी हम इसमें future में इनको explain करना शुरू हो जाएंगे because each skill needs a whole lecture. तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा. अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा था कि 2015 में जो हमें skills चाहिए हैं और 2020 में जो हमें top 10 skills चाहिए हैं, तो I will just list these skills. और future के lectures में I will try to explain how these skills are very important for us, especially to make the innovation in the world or in Pakistan. So these are the skills that we have to learn. That is one of the skill is complex problem solving. तो जितनी भी complex problems होती हैं, अब environmental issues हैं, this is a complex problem that we have to solve. Water की जो है अगर हम बात करें availability की बात करो, pure drinking water, this is a complex issue that we have to solve. तो इनको हम कैसे solve कर सकते हैं? So we have to develop the skills कि हम complex problems को किस तरह से. अगर हम पहला lecture देखें innovative thinking में, उसमें हमने देखा था कि हम अपनी जो इनोवेटिव थिंकिंग के जरिए और एनालिटिकल थिंकिंग के जरिए हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. एंड देन वंस अगेन द नंबर 2 इज द क्रिटिकल थिंकिंग. सो द क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे पहले पूरा एक लेक्चर हमने इस पे दिया. क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट that we have to dwell how we can be creative. So we will discuss in the coming lectures. Then people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, and service orientation, negotiation, cognitive flexibility. So these are the leading skills that we have to develop in ourselves. आपने ये सोचना है, इस पे अमल करना है और इसको देखना है कि हम ये skills जो हैं वो किस तरह से अपने आप में जो है वो डेवलप कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो डेफिनेटली यू कैन आस्क. इसके जो कमेंट्स नीचे चल रहे हैं उसमें आप पूछ सकते हैं. अदरवाइज हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उस पर हम इसे आंसर. अभी तक जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसमें मैं आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि इनोवेशन क्या है, इनोवेटिव थिंकिंग क्या है, इनोवेटिव कंट्रीज जो हैं वो किस तरह से इनोवेटिव हैं, हाउ दे आर मेकिंग द डिफरेंस. और अब हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको मजीद जो लेक्चर्स दूंगा उसमें हम नैरो डाउन करते जाएंगे कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. आप जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में हैं तो आप अपने प्रॉब्लम्स जो हैं आइडियाज को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्या क्या उसमें चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, फंडिंग हम कैसे ले सकते हैं, स्टार्टअप्स अगर बनाते हैं तो उन स्टार्टअप्स को हम फेल होने से कैसे
बचा सकते हैं. These are the things that we have to think. और इस पे हम जो है प्लान करेंगे, डिस्कस करेंगे. आपके क्वेश्चन जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे. और इसके अलावा जो इससे पहले आपको असाइनमेंट्स दी गई हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने वो तस्बीह को सबमिट कर दी होंगी. अगर नहीं की तो आप ज़रूर जो है वो जल्दी से सबमिट करें, बिकॉज़ आपकी वैल्यूएशन जो होगी दैट इज़ आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द असाइनमेंट दैट वी हैव गिवन टू यू. आप उसको जो है वो करेंगे. अभी इसकी जो है आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि अ, जो इनोवेटिव कंट्रीज़ हैं उसमें 4 कैटेगरीज़ होती हैं. एक हाई इनकम ग्रुप्स हैं, एक जो है मिडल इनकम ग्रुप्स हैं. मिडल में हायर मिडल इनकम ग्रुप्स होते हैं, लोअर मिडल इनकम ग्रुप्स होते हैं, और फिर जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, तो 4 कैटेगरीज़ होती हैं. तो आपकी इस हफ्ते की असाइनमेंट ये है कि पाकिस्तान की जो है लो मिडल इनकम कंट्रीज़ में आता है. तो लो मिडल इनकम कंट्रीज में जो कंट्रीज हैं उसमें टॉप के जो 10 इनोवेटिव कंट्रीज हैं वो कौन से हैं, ताकि हम एक कंपैरिजन कर सकें. तो आपकी असाइनमेंट वंस अगेन मैं आपको बताता चलूं. आपकी असाइनमेंट ये है कि जो लो मिडल इनकम कंट्रीज हैं उनमें से टॉप 10 इनोवेटिव कंट्रीज कौन से हैं. तो वो आपने जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो उसकी रिपोर्ट देखनी है, उसको आपने स्टडी करना है. और उसमें ये लिस्ट मौजूद है, जो आपने लिस्ट में से टॉप 10 लो मिडल इनकम कंट्रीज इनोवेटिव जो हैं वो आपने लिस्ट करने हैं और वो आप तस्बीहा को सेंड करेंगे. तो ये आपकी असाइनमेंट है जो कि आपने बनानी है. इसके साथ थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. और उम्मीद है कि आपने कुछ नई चीज़ें यकीनन सीखी होंगी. आपके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं. यू शुड आस्क द क्वेश्चंस और उसको हम आंसर करने की कोशिश करें. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन.